and I welcome all of you to the webinar today. So today's agenda is a new website builder. For the sake of conversation, I would request if you want me to communicate in Hindi or English or mix of both, please let me know your preferred language. Please put it on in the chat. Both is fine, right? ठीक है, both चलेगा. English is fine. Yeah, English. Anyone who is having difficulties in understanding English, please put it ki English will be required. Will moderate the details accordingly. If not, we'll use both. हम लोग normal communication will continue that way, right? So thank you so much everyone for your time today. आप लोग आज यहाँ पर आए हैं and we have brought you a very amazing feature. It's very popularly known in the market though, website builder, but अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म LMS के साथ इंटीग्रेटेड इतना सिंपलिस्टिक प्लेटफॉर्म अभी शायद मार्केट में ऐसा अवेलेबल नहीं है. Though some might think that this can be a sales webinar or a support webinar or a customer education webinar, I would say ki, we want to keep this as a more of a customer education webinar. The reason being is very simple, that there are a lot of technical jargons which people are not aware and tend to get confused in the market. So I will try to push as much as details in the basic fashion. And जो भी आपको मेजरली जरूरत पड़ेगी वो आप क्वेश्चन आंसर के लिए you can use the question answer section Q&A. You can put your queries. My team is here to answer them. So please do not hesitate for putting in your queries, right? So we are now introducing the customizable website builder. So before मैंने 2-3 pages का slide है, it is not more than that. It's just 3 or 4 maximum pages of slides. Just wanted to spend 5 to 10 minutes before going and showing you the actual demonstration how it works. So agenda, what I have put here is why website has been an important tool for any academy, right? So website gives you a fair visibility. So we'll discuss that again in the next slide. Second is technical jargons associated with website. Now trust me guys, and everyone, every academy owner or operator, anyone who is on the this session, I still today in 2022 I still hear people getting confused between domain and hosting. And this I get from very renowned academies. When I speak to them, they sometimes get confused, or it's like I would say in past 7 or 10 years it was never done by the market that the right information has been communicated, that what exactly is domain and hosting. So we'll spend 2 or 3 minutes over there, just an overview, what are the technical jargons that we always come across, and we'll discuss about some of the common ways. So guys, I had been into this industry for around 8 years straight. मैंने 8,000 से ज्यादा एजुकेटर्स के साथ इंडिया में काम किया है. I had myself developed more than 700 WordPress sites for these education academies in the past 8 years. And I know, dozens of ways how a website gets built. And I will also share the challenges, what happens, when you go through that particular route and what are the benefits or disadvantages. We'll spend, 5 minutes over there. Then new website builder introduction. So what we have done, we are not going to do a demo run. So आज हमारे साथ यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, मिस्टर आजम, who is the owner of Sales Opener. So हम उनको उस समय इंट्रोड्यूस करेंगे. So वो अभी हमारे साथ रिसेंटली साइन अप हुए हैं, and what we decided कि we'll try to build his website using the new website builder as he wants. So it will be a live production work, so that it becomes really easy for every one of us to understand that yes, this is something जिसके साथ आप आगे जा सकते हैं. Right. So what all you can do with this new website builder at Edmingle, again, we'll cover, we spend few minutes. So website, an important tool for any education business. So it's a first level of interface for customer interaction, and it will help you do the following. So first of all, digital presence. Yes. आपके पास मोबाइल ऐप हो सकते हैं. You might be having Android app, iOS app, but without a proper website, a basic website,
वो एंड्रॉइड ऐप आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. यू नीड अ वेबसाइट, दैट इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन. कैसे हेल्प करता है वो एक सेकेंडरी चीज है, बट यस, डिजिटल प्रेजेंस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. और इन टूडेज वर्ल्ड योर ब्रांडेड डिजिटल प्रेजेंस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज इट हेल्प्स यू टू डू डिजिटल मार्केटिंग. आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ऑलरेडी, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन फेसबुक एंड थिंग्स, राइट. आप वहां से यूआरएल डालते हैं विजिट वेबसाइट का, या फिर गो टू माय कोर्स लैंडिंग पेज. वो लैंडिंग पेज इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट. आप उसको ऐप डाउनलोड का भी अगर फंक्शनैलिटी लेते हैं, राइट, सो इट इज नॉट वेरी इजी, लाइक इन टर्म्स ऑफ यू योरसेल्फ थिंक कि आप जब फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं वहां लिखा रहता है डाउनलोड ऐप, आप out of 100 times how many times do you actually download an app and see कि क्या है. rather than visit website becomes really easy. visit किया, click किया, देखा, समझ में आया तो आगे बढ़े, नहीं समझ में आया तो पीछे आ गए. then SEO, apps cannot help you do a lot of SEO. so SEO का सबसे important component है blog. in an education I believe blog play a very very vital role आपके ब्रांडिंग के लिए, एसईओ के लिए, आपकी रैंकिंग के लिए. एंड पीपल कैन इजीली स्टार्ट रिलेटिंग देमसेल्फ विथ योर ब्रांड. फोर्थ है, नाउ दिस इज समथिंग डायनेमिक कंपोनेंट. ऊपर ही जो तीन चीजें थी वो तो स्टैटिक है. आपने यू डू इट वन टाइम, यू पोस्ट एवरी न्यू ब्लॉग एंड थिंग्स, इट इज डन. बट फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पेमेंट्स एंड एनरोलमेंट्स. नाउ लेट्स से आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, राइट. आप लोगों को पता होगा दैट इन एप्पल, इन iOS, if you make any digital goods का purchase, there is a 30% commission charged by Apple. Recently Google has also brought that in, so it is 30% from Google. I think they are revising it to 15%. However, we are yet to hear the final use. But if any digital goods like courses are being sold on Google Play Store, through Google Play Store, a commission of 15 to 30% will be going to Google directly, as like in Apple. So now you need an alternative to that, right? Any alternative to that is, you need to drive your traffic to your website where you can integrate any payment gateway like Razorpay or InstaMojo and collect the payments, because India may 30% or 15% revenue sharing with Google or Apple is likely not very much possible as of now, because it will drastically increase the course cost and many more functionalities basically, right? So बहुत सारी अलग भी चीजें हो सकती हैं for listing, for careers, for contactors, anything like that. But I've highlighted few very important things which actually makes sense to have a website. So some of the technical jargons, right? So I hope a lot of you are already aware of this. Domains. So domain वो होता है, let's say www.edmingle.com, this is a domain. Subdomain is learn.edmingle.com. So subdomains free होते हैं, आप unlimited subdomains बना सकते हैं under a domain. If you have purchased www.edmingle.com, so उसके अंदर आप unlimited subdomains बना सकते हैं. SSL is secured socket layer. So SSL is just a 256-bit encryption which ensures that from your website to the hosting space, आपका जो भी data transfer हो रहा है, it is in encrypted format. Hosting. Now, this is something really interesting. So domain and hosting में कई लोग confused हो जाते हैं because a lot of technical people who do the service for them do not explain them clearly. So hosting is essentially a server space where your database or code is actually stored, and domain is your identity. So let's say आपके घर के एग्जांपल से देते हैं. Let's say your house number is house number 583K, वाराणसी, उत्तर प्रदेश. So this is your domain name. But house number 583 पे एक plot होगा जिस होगा, there will be a 2 BHK, 3 BHK or apartment villa. So that is a hosting sort of, which is a physical structure there itself. So that is a hosting. So in technology, it is a simple cloud space or virtual space where your actual code sits basically. Then WordPress has been a super amazing tool for I believe more than 2 decades or something. It has been a super amazing tool for such a long time that even in India, I believe more than 60% of the websites are built on WordPress because it's user friendly. Even you who doesn't know any coding and stuff can just go there and quickly get started. But let me get this clear. WordPress जब start हुआ था, it was essentially designed to be a blogging space.
So if you want to start a blog, start writing, you go to WordPress. But now through the advent of tools, functionalities, it is now being used to even design a lot of complex websites. Yes, you will be needing technical intervention a lot over there, but yes, it is possible now. HTML based website, again a basic, again not basic, I would say HTML, very renowned language, and you need to code for that and get it done. So it requires more expertise than WordPress. Then some privacy policy, refund policy, terms and condition. So what I have highlighted, why I have highlighted these three terms is because now in recent scrutiny, I would say, or verifications, or to build the trust among the users, it is essential to have these three links on your website. You cannot just bypass. If you are collecting payment online, you need to have a refund policy. You need to have a privacy policy because you are collecting data of your users. You need to have terms and condition. Let's say if you are not able to, if terms and condition could be, cover all the legal aspect or something which actually helps you protect from being, framed in the market. Or let's say people, say that after some time learning, students say that I want a refund after 90 days and stuff, but you have a refund policy of 30 days. So these things actually will help you protect in terms of your operations. So again, very basic, not going in deep, closing this slide now. Then we have some of the common ways to develop a website and their challenges. So first is do it yourself. आपके दिमाग में कई बार आता होगा, यार मैं खुद कोडिंग सीख लेता हूँ, लेट मी स्टार्ट कोडिंग, डिजाइन, राइट कंटेंट एंड मेक इट लाइव. सर आपका काम कंटेंट बनाना है और मार्केटिंग करना है. दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच नोबडी एल्स कैन डू. आप वेबसाइट बनाने जाएंगे, दिस इज नॉट योर कोर ऑब्जेक्टिव. योर कोर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू डेवलप फ्रेश कंटेंट एंड डू द मार्केटिंग एंड गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स. So this has DIY, do it yourself, has been very popular. But considering the level of technical education that even I have, or everyone, most of the Indians have, not from the tech background, the people who are operating academies, it's not a feasible idea. Second is hire a freelancer. So generally हमारे दिमाग में ही आता है, because I have worked with a lot of, being as a freelancer I have worked. So academies 10,000, 15,000, 20,000 रुपए ready to spend कि कोई हमारा वेबसाइट बना के दे दे, right? And those guys charge you something, but they will wait for a lot of content from you, right? It becomes, desperately कि आप हमें content दीजिए and things get onto it. Third is hire a company, a costly affair. ये आप जब हायर अ कंपनी वाले रूट पे जाते हैं कि नहीं मेरे किसी स्ट्रक्चर कंपनी में 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए खर्च करके वेबसाइट बनाएंगे, it becomes really costly affair being as an institute, and it's not affordable. And the biggest challenge is एक बार वेबसाइट बन गई, फिर आपके डायनेमिक पेजेस, कोर्स, नए कोर्स आप लॉन्च कर रहे हैं, एवरी टाइम यू हैव टू डिपेंड अपॉन देम, फ्रीलांसर या कंपनी के ऊपर, टू गेट दिस थिंग डन. इट्स नॉट इजी. Fourth, use products like Google Sites, WordPress, Wix, and others. Yes, this is this is what has been very popular in the past 4 or 5 years. People have started, exploring Google Sites. Google Sites, आप कहीं पर भी जाओगे, आप अपना Gmail अकाउंट से लॉगिन करिए, आपको वहां मिल जाएगा. WordPress में एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल की फंक्शनैलिटी चाहिए, बट द बिगेस्ट चैलेंज विद WordPress comes is scalability. Google Sites, again, Google Sites are very amazing, sweet product, easy to use, but with limited functionalities. Again, you cannot do a lot of things, right? अब next बढ़ते हैं, what we are discussing here, why we are here, what is actually going to suit your business, right? So आपको website builder plus LMS plus live classes plus certification feature सब एक जगह हो जाएगा ना, आपका problem solve हो जाएगा. You might be spending 2,000 rupees to 3,000 rupees for hosting and SSL per year. Am I right? Harninder Kaur ma'am, am I right? Vicky sir, Vicky, Google Sites में नहीं होता है, but am I right? For SSL and hosting, you might be spending somewhere between 2 to 3,000 rupees for a year, for sure. This is a minimalistic cost I'm saying. Apart from domain cost, जो 800-900 रुपए का आता है, उसके अलावा की cost बोल रहे हैं. Right. So
SSL एक टाइम पे 4,000 रुपए साल का आता था. Now it has been to 800 to 900 rupees, and hosting का basically 800 to 2,000 rupees anybody can charge like that. So we have even sorted those issues. Just if you have one domain name, let's say www.edmingle.com, you can simply create a website here. No hosting charges, no SSL झंझट, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. सारा कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड आता है. राइट, एंड गेट मोर कंट्रोल ऑफ योर ब्रांड. अगेन अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है, इट शुड बी वेरी सिंपल कि आप एक पीपीटी एडिट कर रहे हो. इट इज एज सिंपल एज दैट. आपको बस ओपन करना है, जैसे लगेगा पीपीटी एडिट करें. इट्स एज सिंपल एज दैट. राइट, सो विल गो टू द न्यू वेबसाइट बिल्डर. इट्स सिंपल. We'll cover how simple it is to create a website, curated content options in market, and for design you can use free Canva. I hope, I am very sure that 90% of my audience who is listening to this is actually using Canva for designing or free pick. Can I get a heads up again? Yes, I got 3 yes. Wow. So Canva is again a very popular free tool. ज्यादा से ज्यादा अगर पेमेंट वाले ऑप्शन जाएंगे तो 32-3300 रुपीज फॉर एन एनुअल कॉस्ट. इट्स सुपर इजी, यू नो. उसमें इतने सारे टेम्पलेट्स आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं. So that is how we are going to, you know, then go to the next one. Let's do it on the live website. So now with this, we want to introduce Azam sir. Azam sir, I hope you have access. I have the audio access. Can you hear me? I would request you if you can, you know, please switch on your camera. Oh yes, definitely. Hi everyone. Azam sir, is everyone able to? Yeah. Is everyone able to hear me? Am I audible? Yeah, I think yes. Everyone is saying yes. Right. So I want to, you know, heartfully welcome Azam sir. He has recently joined. Thank you very much. Working with us, you know, chosen Edmingle over others. And you know, we thought that we were already planning to do a webinar, and we thought, you know, why not take a live use case and then demonstrate how this website builder could actually help you achieve what you want. Right. So Azam sir, agar aap you know, if you can just give us your background about, you know, in 1 or 2 minutes, right? Just people can know that, you know, sure, we're going to hear and do it. Sure. So hi everyone. I've been working as a brand consultant, and there are 2 things I do and I enjoy doing. One is I love designing brand campaigns. What kind of a campaign is going to influence? What kind of a messaging is going to connect with the audience? So influence connect is something that excites me. So that's part 1. Part 2 is I work on this. I work on the idea of what is it that I need to say in the next 3 to 5 words, or in 30 seconds, 10 seconds, that could get you interested in what I'm selling. So sales pitch. So 2 things I love doing is 1, brand campaigns, and 2nd, sales pitch. And sales opener is all about that. And the reason I chose Edmingle, this is important, is because I liked Prashant's hustle. I like the way he's building it up 1 step at a time. I had a choice to go with a lot of other players, but I chose Edmingle because I liked his genuineness, the way he wants to build it up. So that's the reason I'm here. I hope you all have a great time. Really, thank you, Azam sir. You know, I'm always so much. You know, thankful to everyone. You know, trust me, with all the experience that I come over, you know, I have always wanted to revolutionize this industry and, you know, help in the best possible ways. But definitely, I cannot be everywhere, but wherever is possible, you know, I try to be there. Right. So with this, I'll you know, go there and start the presentation. सो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सी पीपीटी बनाई है. सॉरी, इट्स अ सिंपल गूगल डॉक्यूमेंट. राइट, यहाँ पर मैंने लिख लिया कि मुझे करना क्या क्या है. आई एम जस्ट वांटेड टू बी वेरी सिंपल कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है. आई वांट टू मेक अ होम पेज, कोर्स कैटलॉगिंग पेज बनाना है, मुझे अबाउट अस पेज बनाना है, या कोर्स लैंडिंग पेज बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड कैंसिलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट अस है. मुझे बनाना क्या है, मैंने बस वो लिस्ट कर लिया है. ठीक है, एक टूल का मैंने नाम लिख लिया है, शेयर विद दिस करके एक टूल आता है, उसका क्या यूसेज है मैं आपको वो भी बताऊंगा. मैंने अपने सारे सोशल लिंक्स को कंसोलिडेट कर लिया है. यू नो, व्हाटएवर सोशल लिंक्स आर देयर, आई हैव जस्ट कंसोलिडेटेड इट बेसिकली, सो दैट जब मैं वेबसाइट बनाने के लिए एक्चुअली मैं पोर्टल ओपन करूं तो मुझे ढूंढना ना पड़े इंफॉर्मेशन को. मैंने बस कंसोलिडेट कर लिया है. एक कॉन्टैक्ट अस की सारी डिटेल्स हमें चाहिए होती है कि दिस इज समथिंग व्हिच यू विल बी ऑलवेज नीडिंग, यहाँ पर पुट करो, वहां पर पुट करो, तो मैंने कंसोलिडेट कर लिया वो भी डेटा. एंड दैट्स ऑल. एक मैजिक कलर एंड टेक्स्ट कलर मैंने ये भी डिफाइन कर लिया कि मुझे किस कलर में रखना है.
इट्स सुपर सिंपल। मैंने एक नेवी ब्लू है, एक येलो है, राइट? सो इट्स अ कंट्रास्टिंग कलर दैट आई हैव सेट। सो अब इसके बाद मैं वापस से जाता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर यूआरएल salesopener.com। सो ये अभी पुरानी वेबसाइट जो सर की है, कुछ टाइम सर पहले ने एक्सपेरिमेंट किया। सर आपने ये खुद से करना चाहा था कि फ्रीलांसर से बनवाया था? बस बनवा ली थी किसी से। तो यही मैं बोल रहा था, जब हम लोग फ्रीलांसर को किसी को पकड़ते हैं ना, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ तो बना देता है। बट क्योंकि बीइंग एज एड्यूप्रेन्योर और एजुकेटर, हमारे पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पूरा कंटेंट दे सकें किसी को। एंड इट आफ्टर सर्टेन 10-15 दिन तक जब कुछ मूवमेंट नहीं होता ना, तो एक बार दिल करता है कि भाई जो भी है लाइव कर दो, अभी हम बाद में देखेंगे। आई होप आजम सर ऐसा ही हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। सो ये बहुत ज्यादा होता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम किसी कंपनी को हायर करते हैं कि एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। तो पहले खुद करने की कोशिश करते हैं, फिर फ्रीलांसर को पकड़ते हैं, फिर वहां भी नहीं होता, फिर कंपनी को पकड़ते हैं, फिर सोचते हैं वर्डप्रेस पे ही बनवा लेते हैं या ऐसा कर लेते हैं। सो मैंने एक न्यू डॉट सेल्स ओपनर, एक सब डोमेन लिया है। अगेन आप देखिए ये सब डोमेन, इसीलिए मैंने आपको टेक्निकल जार्गन्स का थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन दे दिया था। सो सब डोमेन न्यू डॉट सेल्स ओपनर पे हमने एडमिंगल को लिंक कर दिया है। आप देख रहे हो ये 100% व्हाइट लेबल फैशन में। और ये जो आपको अभी दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट आता है। मैंने कुछ अभी किया नहीं है इसके अंदर, मैंने सिर्फ बेसिक डिटेल्स को इकट्ठा कर लिया, कुछ भी किया नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर ऐसा हो गया। और अगर आप ये एक कोर्स पेज देखोगे, यहाँ पर कुछ एक मैंने हाउ टू रीड करके इनका एक बेसिक एक सिंपल सा कोर्स नाम दे दिया। कुछ भी नहीं किया है, एक कोर्स बना दिया है और अंदर बस ऐसे सिंपल सा जागा नहीं, ये खुद सारा डिटेल अपने आप आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं करा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्यूरेट द कंटेंट और स्ट्रक्चर इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आजम सर। सो मैंने आजम सर के साथ थोड़ा सा कॉल लिया था आज के दिन में, आधे घंटे का, वेयर आई ट्राई टू अंडरस्टैंड सर आप क्या करना चाहते हैं, राइट? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? एंड बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ इट थोड़ा सा हमने उसको मॉडिफाई करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इफ एवरीवन हैज गॉट द जिस्ट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, please comment yes in the chat box and we shall move forward from there. कोई किसी को डाउट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? क्योंकि नाउ दिस विल बी अ आई थिंक 15-20 मिनट्स का रिगरस थोड़ा सा सेशन होगा जहां पर मैं आपको हेल्प करूंगा अंडरस्टैंड करने में। सो क्वेरीज हम फिर उसके बाद लेंगे, राइट? सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। एवरीवन हैज कमेंटेड yes. So I'm just going inside the account. This is a complete fresh account, nothing too much done. So okay, सबसे पहले एक जो सिंपल सी चीज होती है कि मैं एक अपना कोर्स बना लूं। आई डिलीट दिस ओल्ड कोर्स, राइट? मेरे कोर्स का नेम है हाउ टू रीड। सो सर प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं तो, राइट? मैंने सिंपल सा एक कोर्स बना दिया जिसमें मैंने कोर्स डिटेल में जाके कोर्स का ऑनलाइन सेटअप कर दिया। प्रिटी नेम सही सेट हो गया है। मैंने कुछ इनके इमेजेस ले लिए हैं पहले से, रीडिंग करते हुए एक बच्चे का इमेज है। सो दिस विल बिकम माय कोर्स इमेज, राइट? एंड ओवरव्यू के लिए आई विल जस्ट ओके प्रोमो वीडियो। ओके एक इनका वीडियो भी ले लेते हैं, लेट्स सी अगर वो हमारे काम आता है कि नहीं। सो ये मान लीजिए सर का वीडियो है हाउ टू फाइंड जॉब्स, ये मैंने एम्बेड कर दिया, शेयर। मैंने ये एम्बेड वीडियो लिंक लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अपडेट। बस इतना सा मुझे यहाँ पर करना था। अब आई नीड टू आपको मैं साइड में पैरेलल में ये वाली वेबसाइट को फाइल ओपन किया आपको, ताकि दिखाते जाएं कि यहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं या कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक। बस ये देखिए यहाँ पर कोर्स बना हाउ टू रीड, जिसमें एक इमेज आ गई है, ठीक है? विथ 2 मिनट्स ऑफ सेटअप। सर ने मुझे बताया कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 का 3 हफ्ते का कोर्स है, राइट सर? या सो मैंने सिंपल से यहाँ पर एक वीक 1 कर दिया। सर इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। पहला वीक का क्या है? अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। मैंने इसको प्री एंड डू यू वांट कि बच्चा इस सेक्शन को कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सेक्शन, राइट? तो दूसरा चैप्टर, दूसरा वीक क्या है सर? वीक 2 समराइजिंग द प्रिंसिपल्स। समराइजिंग द प्रिंसिपल्स। मेरी अगर स्पेलिंग गलत हो प्लीज मुझे माफ करिएगा, आई एम
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कभी। वीक 3 क्या है सर? applying the principles. आई होप इट इज राइट। ठीक है, मैंने इसमें एक टीचिंग मटेरियल के नाम पे सैंपल इमेज अपलोड कर देता हूँ, so that it looks good when we open it, right? So okay, PDF document is there, so sample PDF open कर देता हूँ, and मैं इसको चाहता हूँ कि ये 2 बार से ज्यादा ना खुले, इसको प्री रिक्विजिट नहीं करते हैं। create week 2 में I'll just use a clone. Okay, clone is not available here, so we'll skip that again. Sample PDF, I'm just uploading it for the sake so that वहां पर कंटेंट दिखे and you have a relevance कि कहां पर कैसा कंटेंट यूज हो रहा है। So again, sample PDF 3, ये आप एक ही में कितने तरह के कंटेंट डाल सकते हैं, इट डजंट रेस्ट्रिक्ट दैट, यू कैन हैव वीडियो, एग्जाम्स, एवरीथिंग लाइन बाय लाइन हियर, आप उसका पूरा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस कंटेंट इज रेडी, एंड सर लेट्स से अभी तो हमने प्री रिक्विजिट सेट किया है, राइट? डू यू वांट दैट आफ्टर अ वीक ओनली दिस नेक्स्ट वीक 2 कंटेंट शुड ओपन? After the class is done, and if people want to have a preview so that they can prepare for the class in advance, then I'm okay with to share the preview of the second week. Got it. So मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि let's say from batch start date, we'll put a batch start date of 1st of this June. Okay. We'll put a batch start date 1st of June, and in 3 days it should open. Let's say 2 days, in 5 days, and in 7 days. I am just using some random number, no relation at all, right? जो आपके actual batches होंगे. So यहाँ पर एक batch मेरा automatic बन चुका है. I'll just go ahead. Again, I'll show you कि आप अपना ये basic structuring जो अपना data normal डालते हैं, how this data is actually getting linked with your website, क्योंकि website builder बनाने का purpose ही वही है कि it should be useful to you, right? आपको एक ही data बार बार नहीं डालना पड़े. So how to read है, and Azam sir, like when do you take, let's say Monday, Wednesday, Friday 2 घंटे का session? Correct. 5:30, 6 p.m. 6 p.m. Okay. 5:30 to 7:30. Yeah. And save timing. So ये 1st June से 21st June के लिए मैंने sessions schedule कर दिए हैं. I'll just close this and let's see. अभी देखिए how to read है. अगर मैं इसको open करता हूँ तो कुछ कंटेंट बाय डिफॉल्ट आ जाता है जो अभी हमने पीछे सेटिंग की है। लेट्स से ये देखिए हमने YouTube का लिंक डाला था उधर, राइट? सो इट बिकम्स योर प्रोमो वीडियो हियर, पीपल कैन फर्स्ट सी योर वीडियो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। देन कोर्स ओवरव्यू, शेड्यूल ऑफ क्लासेस, अगर आप शेड्यूल ऑफ क्लासेस देखेंगे इट्स शोइंग 1st June to 21st June to 9 classes, so people know that there are going to be total 9 classes which they have to attend and stuff, right? Then course curriculum, आप ये देखिए week 1, week 2, week 3, people can actually go through the entire courseware कि क्या क्या मुझे पढ़ाने वाले हैं. Definitely they cannot access this is logged content, right? So once they enroll, then only they will be able to access it. And then course instructor का profile, so we'll also create this, right? So I hope it is clear till now कि हमने जो content यहाँ पर डाला, how it actually got reflected over there, and then we are going to go on the main website. Please comment yes if it is working for everyone. So let's move forward. So now we are going into the actual website builder. So हमने यहाँ पर 2 तरीके से कंटेंट बनाए हैं. एक डायनेमिक है, जैसा आपने देखा कि पीछे आपने शेड्यूल ऑफ क्लासेस डाला, वो आ गया, वो डायनेमिक कंटेंट है. आपने इधर सेटिंग कर रहे हैं, उधर रिफ्लेक्ट होता जाएगा. बट एक पूरा कस्टम या स्टैटिक आप अगर चाहो तो वैसा भी कर सकते हैं. सो दिस इज अ न्यू वेबसाइट बिल्डर. एक्सेस करने के लिए आपको अपने वेबसाइट एंड ऐप में जाके वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करना है. Some people who have not enabled it, आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा enable new website builder. अभी open website builder है, but it will be enable website builder. And नीचे आपके पास ऑप्शन है कि आप old और new में switch भी कर सकते हैं. Let's say who are already our customers from old time, right? So उनके पे अब ये old selected होगा, but आप अपना पूरा नया website builder access करके बना के check कर सकते हैं. And then once you are comfortable, then you can just click here to switch. As simple as that. कि आपको नए website builder पे switch कर जाना है. So this is the interface of our new website builder, and इसमें आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं.
मैं सिंपल सा स्टार्ट करता हूँ। सर ने मुझे एक पीपीटी शेयर की थी जिसमें ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन था, तो मैंने आई जस्ट गो अहेड एंड डू सम ब्लू कलर की मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेटिंग कर दी। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पर आके मैंने ब्लू कर दिया, फिर लिंक होवर में येलो कर दिया है, अगेन सेम वे। सो इफ यू सी हियर, आप होवर में देखिए येलो हो जा रहा है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट हियर ट्रेनिंग यू की एक एक फंक्शनैलिटी कैसे चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव की चीजें यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं, and we are just going to build a simple website, and then our team, our support team, sales team will be always there for you to help you out and get it done if you are facing any difficulty. So this is typically जैसे मैंने कहा था कि आप सिंपल एक you are just like editing a slides, right? It is as simple as that. If you see, write your headline here, so hello, hello world, right? So this is as simple as editing a slide itself, right? आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कंटेंट कुछ चेंज करना है, डन। ऑल कैटेगरीज यहाँ पर अनकैटेगराइज, वो आप अंदर से चेंज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। आप ये सेक्शन डिलीट करना चाहते हैं, राइट? डिलीट द सेक्शन। आपको ये सेक्शन नहीं अच्छा लग रहा, डिलीट कर दीजिए। ये नहीं अच्छा लग रहा, डिलीट कर दीजिए। you can customize, remove sections. Let's say home page पे सिर्फ आपको ये रखना है explore courses or something, you can do it that way. I'll even delete this, right? मुझे एक नया section चाहिए सबसे पहले। let's say these are the, if you see theme sections, so these are dynamic sections basically, but customizable content section जो non dynamic है वो यहाँ पर है। so I'll start with simple, let's say I'll put this one, then एक introduction slide हो गई। फिर मुझे चाहिए let's say I want to give a detailed instruction, so let's say course overview. If I say course schedule or course short info, I think this will be included in this course. Next, theme section, course pricing options, related courses, course overview. Okay, course overview, I'll put course overview above, and what is included in this course is here. I'll then add course schedule. So again, schedule will come from the background. Then we have course on sale. Okay, so course on sale, I'll put a course on sale. मैं आपको वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स दिखा रहा हूँ जो आप यहाँ सिंपली पुट फॉरवर्ड करके यूज करना चालू कर सकते हैं, एंड इट्स सो सिंपल। हमने क्यूरेट करके पहले से ही वो सेक्शंस बना दी जिनको आपको बार बार जरूरत पड़ती है, तो हमने उसको बहुत फिल्टर करके बनाया है, एंड देयर विल बी डेफिनेटली विल बी कीप ऑन अपडेटिंग इट। देन वी हैव लेट्स से social proofs, then we have about the trainer, so instructor, course instructor, then we have let's say testimonials, then we have a checklist, which is let's say checklist, and then we have a frequently asked questions, right? I think checklist यहाँ है, testimonial, frequently asked questions, right? And then I'll have get in touch or video with the CTA. Let's say आपको एक और वीडियो देना है यहाँ पर, right? And then theme section में एकदम लास्ट में जाके we'll put a contact us, and I'll just click on save. अभी मैं कोई content editing नहीं कर रहा हूँ, I've just put a simple thing, and let's see how it looks. Azam sir, I hope this is I've just put a sample default templates जो by default आते हैं। So course overview में हमने कोई content नहीं डाला। Included in this course online program, schedule of classes पीछे से आ गया। Write your heading. Again, I'm just going to help you understand how this works. Then आपका lead capture form, write your headline here that things are there. Social proofs, again you can put all the relevant proofs. Course instructor के बारे में details, what people say, testimonials आप डाल सकते हैं, checklist for the course that you want that people should go through this before coming to the session,
or before joining the session. FAQs आप यहाँ पर डाल सकते हैं, and this is a video section, हमने कोई video link नहीं है, and this is a get in touch section. So this is simply you have structured your landing page, or let's say a home page where you have all the you can edit all the content. Azam sir, are you there with me? Yes, very much. So आपने अभी ये देखा कि हमने बस एक बेसिक इंसर्ट करके नो एडिटिंग एट ऑल, बस एक स्ट्रक्चर बना दिया है. Fair enough. राइट. अब हम जाते हैं, एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है हमारा, एक हमारा फीचर है जिसमें आप अर्जेंसी बिल्ड कर सकते हैं कोड्स परचेज करने के लिए. So this is a promo code. So I'll just add a simple promo code and will show you how it works. Flat 100. So it's a flat 100. So let's say this is active for the first 7 days of registration for how to read, and it's create. मैं वेबसाइट बिल्डर पे गया. I'll refresh this page again. If you see, मैंने ये कोर्स ऑन सेल डाला था. प्लीज सी, दिस इज अ कोर्स होम पेज. मैं चाहूँ तो कोर्स होम पेज को जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, बट आई मेड इट एज सिंपल. ये दिस इज द ओनली पेज दैट आई एम गोइंग टू फॉर द सेक ऑफ टाइम एंड थिंग. सो ये मैंने यहाँ पर डाला था. आई कैन हेल्ड अप द प्रोमो कोड और मैं टाइम डिफाइन कर सकता हूँ. लेट्स से दिस प्रोमो कोड इज गोइंग टू एंड ऑन 7th. सो दिस essentially gives you the timer functionality to create an agency that only 3 days are left. If you use this coupon code, you are going to get lucky. So if I just go to the website and go down, if you see now this timer is coming. So इससे आप urgency build कर सकते हैं. And if I just click on enroll now, right, ये already coupon code applied होके आ जाता है. And again, if you click on enroll now, if the student is already logged in, it will ask for that, or it will ask to sign up basically as a normal functionality. So this is one more attractive feature which we have introduced. Again, this is this timer functionality is a complex one if you try to deploy it in on your own. So we have even given you this type of functionality where you can build an urgency that boss course का 2 दिन बाकी है. Let's say you are running a webinar, and during the webinar, क्योंकि आपके पास यहाँ पर हमने पूरी सेटिंग दी कि यू इवन कस्टमाइज द टाइम कि कितने बजे तक ये एक्टिव रहना है. लेट्स से इफ इट इज जस्ट अवेलेबल फॉर टुडे टिल 6 PM, right? So you can let people know that in just 2 hours the offer is ending, right? You get so massive discount, but in 2 hours you have to enroll yourself. So this is going to be a game changer for you, and you can use it as open. I'm not linking it with any course. You can use it as per your requirement. Is that feature interesting for everyone? Can I get yes? Amazing. So this is one feature, right? I'll again adding this content. I'm not just going to do it. I've got a query here कि blog कैसे add होगा, right? I'll show it in a simple way. Sir, हम लोग इसको complete करते हैं इसके बाद, because let me just help with the blog, a simple blog. So let's say this is my blog. I'll put a domain, subdomain, and let's say this is a blog page मुझे जो बनाना है, and let me add some slider, video, custom header. Okay, let me show it to you. So I'm just going to create a simple blog page here. Let's say this, then articles. Let's say if you have some articles, so this, and articles again more. So if you have lengthy articles, we have given you a lot of templates to go through. So you can define your page. Let's say this is a custom blog page that you make. Again, you can add categories and everything. That is also possible.
I'll demonstrate, we'll probably schedule another session for that, because in the sake of time, it's very limited. And when you go back, if you go to custom pages, probably you can just go here and duplicate. Let's say you want to create another blog page. Let's say this is blog 2, right? So it is directly controlling your blog, right? And you get again the same, format of the page here, and you can add as many as content, as you like, because you do not need a very comprehensive blogging management site unless you have, spree of writers who are pushing every day 10 pieces of content. So that is not how it is going to happen. So courses page is again, same thing, with every course page, whatever you make it live, you can have a custom page for dedicated marketings, or you can even create a separate page for that. This is how we have done. So we will be completing, again, I cannot complete the entire website here on the call. So we'll be, after this call, I'll be sitting with Azam sir, and we'll be completing his website along with him, and we'll be sending you an update that, how this new website has come to this. Oh yes, logo, that's nice. Someone has commented here for the logo. So logo is very simple. You go to website and app. I'm really sorry I did not update the brand settings. So just go ahead, choose the logo, sales opener, and it's as simple as done. I'll even update the favicon for that sake. Okay, that's file size is big, but if you go and see here now, it's, the logo has been updated. So it's fully dynamic, sir. ISR, I hope, that has helped for you. So you can create custom websites as per your requirement, as you want it. There are so many other features which we cannot cover here. Okay, I'm really sorry for that if it took a couple of hours for you to start. But yes, we will be conducting these type of training sessions every Friday, 3 p.m. What we have decided that every Friday we'll be conducting these type of sessions where we'll be covering a particular, type of requirement from the market. So I hope everyone has liked the session. Will be open for Q&A because it's just 10 minutes more left for the session. I did not intend to take it extend it for a long hours. So I hope this has worked well for everyone. So few more things which I wanted to highlight before we close the session at 4. Let's have a hard stop at 4. You might come across a lot of products. There are so many dozens of products in market, right? But again, the type of simplicity that a website builder should have. We have researched all our competitors. We have done a thorough research, and we have made it in a simplest format possible, basically. And because this is a feature which definitely requires a lot of hand holding in things. So we are also rigorously training our team members, how to right, how to update, how to get the new website builder released for everyone. So we are helping everyone out there. Please reach out to us, put a mail to support@edmingle.com in case if you are not able to figure out how to do things. But we will be there, just a email or a call away. You will be also having your sales guys, with whom you have already connected, for the sale. You must have connected with someone. Let them know that you need help, and we will be putting extra efforts to ensure that you are getting comfortably shifted to this new website builder, and make a new dent in the market, that yes, you have something beautifully built out. And it will be done by you only. We are just going to be a hand holding partner for you. So Neha ma'am, yes, we will be, we have taken the query. I think Gursevak ji has already responded to Neha and Robin. You please use, support@edmingle.com to send in your queries. It gets directly reported to the management, and we are keeping an eyes on over it, and we will get it resolved.
So any more queries, we'll be here for 3 more minutes and we'll put a full stop, and then we'll take it for, we'll send you an update for, how the sales opener website has come up, and let's see how things work thereafter. So Aya sir, Gursevak ji and team will connect with you directly. You can, put your queries, specific queries to him, and they will, address them. Thank you, Vicky sir. Yes, thank you, Vicky sir, for such an appreciation. Yes, sir. Yes, there is a very beautiful question asked by IS, which I want to take here right itself. Some of the videos are huge in GBs sometimes. I'll give a very practical scenario for sake of everyone. मेरे पास मान लीजिए 1 GB का कोई 1 घंटे का वीडियो है, राइट? अगर आप वो वीडियो सिस्टम में अपलोड करना चाहते हैं, वी कैन गेट इट enabled, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. प्लीज अंडरस्टैंड, मार्केट में आपके जो एंड यूजर्स हैं, दे आर हैविंग अ लिमिटेड बैंडविड्थ, और लेट्स से पर डे का उनका 1 to 1.5 GB का डेटा कंजम्पशन का फ्री लिमिट है, राइट? दे विल नॉट स्पेंड एन एक्स्ट्रा टू गेट द कंटेंट फ्रॉम यू, बट एक अच्छा 1 घंटे का कंटेंट कैन बी कंप्रेस्ड into a 400 MB ka file basically. So if you want them to consume your content 1 or 2 hours more and more for the day, you need to compress your file, and quality is not getting reduced. हमारे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे आए जिन्होंने बोला they have 1.5 GB का एक वीडियो. हमने कहा सर we will open. They said please open it, our consumers will read. You will not believe sir, 400 videos uploaded, और उसके बाद उन्होंने कंप्रेस किया और कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि it requires a lot of bandwidth to be played. So इसलिए it's very important to compress the video. वीडियो कंप्रेस करने के लिए हैंड ब्रेक करके एक सॉल्यूशन आता है, राइट? आई थिंक टीम ने सपोर्ट में शेयर भी किया है, और एक हैंड ब्रेक करके टूल भी आता है. इट्स एन ऑफलाइन टूल, यू कैन कंप्रेस as much as possible. It's always recommended and advised to compress your solution, videos before you upload into the system, because your end users will not be able to go through or complete the videos there if that is the case. So we will be coming up with more and more sessions from every Friday, and we'll try to put here. और जिन्होंने account अभी तक नहीं बनाया Edmingle पे, they can visit www.edmingle.com. they can create a free account. Our sales team will reach out to them, will help them set up their account and understand their basic requirements, and probably if things matures, then we can turn this into a partnership, right? So really thank you everyone for joining the session.